So hi everyone, it's my third YouTube video that I am shooting. मैंने सोचा था थोड़ा सा अच्छा बैकग्राउंड और थोड़ा तैयार शेयर होकर डालूंगा वीडियो लाइक 1-to-1 कॉन्वर्सेशन विद अ गुड एनवायरनमेंट बट ये वीडियो आज इम्पोर्टेंट है, आज ही डलनी इम्पोर्टेंट है और लाइक इन द जर्नी ऑफ आवर मेंटल हेल्थ. This video needs to be shoot by today only. That's why I am shooting it. अभी घर आया जिसमें and I got my parcel today, the parcel of medicines. So I thought I should make a video and will collaborate the topic with it. So basically starting two videos include the introduction of mental health, and the second video specifically concludes us that when our minds need rest, it needs rest too in some situations in our monthly tenure. So basically in this video we will talk about the signs or symptoms, you can say, that we get in the case of any anxiety issues or that can lead to depression also. So basically I'm talking about the symptoms that people may face, and it may be a case of depression or anxiety which many a times people ignore and उनको नहीं पता होता कि राइट टाइम पे राइट ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट होती है. इट इज़ नॉट अ स्मॉल थिंग एंड इट नीड्स टू बी कैटर्ड at the right time or at the right place from a right place. अच्छे डॉक्टर मिलना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली बहुत शॉर्ट वीडियो रहेगी. आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द सिम्टम्स like I have written on my laptop also the basic symptoms that I can also relate. My companion for all the videos is ChatGPT. I talk a lot with him, you can say, and ChatGPT helps a lot. It gives you a lot of knowledge you want to get in any kind of like field, from any kind of genre. So basically you can make your companion, make AI your companion, and it is very okay to adapt the AI era of this century. So like basically the basic symptoms, I wrote my symptoms myself first, then I asked ChatGPT about what people are facing around, and most of them connected, like 70 to 80% of them are like resembling and connecting. So yeah, it's a common issue, I guess. So basically the symptoms we will go one by one. First thing is the normal life illusion. Like you are living a normal life and all is going well in your life. Like I also talked in my earlier video, like the work is going well, your personal self-being is going well, and everything is going well, but still you feel tired, your minds need rest, still you get some sort of fatigue in your body कि सार्थक आज रेस्ट करने की बहुत ज़रूरत है, आज नहीं हो रही चीज़ें लाइक तो चीज़ें फिजिकली तो बहुत सही लगता है कि सब कुछ चल रहा है, बट मेंटली इट इज़ नॉट. सो इट कैन बी वन ऑफ द सिम्टम्स. द सेकंड वन इज like you are scrolling through your social media accounts but you are not finding anything interesting. You are just scrolling it for like escaping the world, और आपको लगता है कि स्क्रॉल करते जाओ and you will feel better, but नहीं होता वैसा. So using more and more social media is also a symptom of it. I can also relate to it क्योंकि I have also tried it, but it is a very big indicator that you can be a sufferer of depression or anxiety. The third one is feeling tired even after sleeping.
एक मेरे अकॉर्डिंग तो सिम्टम ये है कि नींद बहुत कम आती है आपको, बट स्टिल नींद अगर आए भी तो यू फील अ लॉट ऑफ टायर्डनेस इन योर बॉडी की, बहुत थकावट फील होती है। एंड कभी कभी लगता है कि अब तो यार 10 घंटे सोए थे, अब तो नहीं होना चाहिए था, बट स्टिल वी फील फटीग इन आवर बॉडी, हमें थकावट फील होती है, हमें फ्रेश नहीं फील होता। ऐसा लगता है कि अभी 10 घंटे सो के उठे हैं और हमें और नहीं चाहिए। तो बेसिकली दीज two are the connected symptoms. In one case you doesn't get sleep easily, and in the second case you sleep more and more, still you never felt that much fresh that you felt earlier. So the fourth one is seeing people around you. आप लोगों को अपने आसपास देखते हो, हर कोई अपनी लाइफ में देखता है, तो आपको जब वो खुश होते हैं तो यू जस्ट फील एक फीलिंग आती है कि यार वाई नॉट मी, मैं उनकी जगह रह के खुश क्यों नहीं हूँ। उनकी लाइफ में भी नो डाउट बहुत प्रॉब्लम्स हुई एंड ऑल, बट स्टिल बहुत तुम्हें लोनलीनेस फील होती है, तुम्हें अलोन फील होता है कि व्हेन एवरीवन इज हैप्पी and everyone is doing their job so perfectly, so why are you not able to get there, why are you feeling so much stressed, और तुम्हें बहुत अकेला फील होता है। तो it is also a very good indicator, you can say a big indicator of depression or anxiety. The fifth one, the most common one, like you feel like crying without any reasons multiple times. I will not say कि it is without any reasons, क्योंकि reasons हर किसी के पास होते हैं। तो जब इंसान छोटी छोटी बातों पर उसका रोने का मन करता है बार बार, उसको एंजाइटी होती है और उसको आसपास अपने कोई भी नहीं दिखता। सो एंजाइटी वो धीरे धीरे इट कैन इंक्रीज एंड इट कैन लीड टू अ stage of depression that needs to be catered. So basically these are the five symptoms I have covered in this video, basic symptoms. I also want to make a video where I will cover the advanced symptoms, where you can get a good amount of knowledge from it. So basically ये जो 5 चीज़ें मैंने बताई है, if you have all 5 of them, then it can be a case of anxiety or depression, but it is not. It can be because I'm not a psychiatrist or like a doctor that can guide you. So it's like a disclaimer for you. I'm just sharing my journey. So in the part of the journey, I am telling you with the help of public domain knowledge also, with my own experience of like past 8 to 9 months. And here's my 4th packet of the medicines जो आज मेरे तक आया है, and will open it in front of you guys. I am sharing journey, so why not? And it includes like a bunch of I guess 4 tablets each. It will be like for 1.5 to 1.75 months. So yeah, it's the 4th packet that I received. So पहले डर लगता था ये सब देख के कि इतनी दवाइयाँ लेनी पड़ेगी इतनी अर्ली एज में, बट धीरे धीरे हालत रहती है। एंड इट्स नॉट अ बैड थिंग कि यू आर टेकिंग मेडिसिन्स। इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप ठीक हो जाओ विद प्रॉपर ट्रीटमेंट एंड प्रॉपर गाइडेंस, जो बहुत लोगों को नहीं मिल पाती। बहुत लोगों को ये नहीं समझ आता कि दे आर इनटू डिप्रेशन, एंजाइटी लाइक बट सो या आई जस्ट वांटेड टू शेयर इट विद यू, क्योंकि आज पार्सल आया था। आई वांट टू ओपन इट टुडे, आई हैड टू ओपन इट टुडे बिकॉज पिछले एक हफ्ते में मैंने इन पास्ट 6 months आई एम टेकिंग द मेडिसिन रेगुलरली, बट पिछले एक हफ्ते मैंने ड्रॉप कर दी थी। I was not taking medicines and I was thinking कि I will be able to do it now. I will be able to get healed और मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी, but life ऐसी है, sometimes it takes more time and it is totally okay. कोई डरने की ज़रूरत नहीं है।
I've consulted with the doctor also, and he urged me to continue it because मुझे नींद आना बहुत कम हो गई थी पिछले 1 हफ्ते 10 दिन से. Like I was sleeping for like 5 hours a day, so it was important. So conclude करते हैं इस वीडियो को, इसको ज़्यादा लंबा नहीं बनाएंगे. And I will not share this video much now, and I will not also promote my channel that much that I used to do earlier, because I think organic audience पहुँचे यहाँ तक तो it will be a better. So I will not share in the groups and all. There are a lot of people that are just there for fun. So yeah, all about today. I have told you, informed you, and life will be good one day, and it will be more beautiful, more better. Next year also, like 17 days are pending for the next year, and hope next year brings peace, happiness to all my viewers, whosoever is viewing this. And I guess most of you guys are viewing it on 2x and something like that. So yeah, okay, so I will inform you about my medications also, but as I said कि ना तो मैं डॉक्टर हूँ, ना कोई साइकेट्रिस्ट हूँ, ना कोई काउंसलर हूँ. I am just sharing my journey, and I want कि मेरे बाद भी और हमेशा के लिए ये वीडियोस इसी प्लेटफॉर्म पर रहे और किसी ना किसी को किसी ना किसी तरीके से हेल्प ज़रूर करें. सो या दैट्स माय विश, एंड टेक केयर, गुड बाय, एंड लव यू ऑल, बाय बाय.